Okay, guys, can someone please confirm if screen is visible? Can you hear me? Yes. Okay, great. So Yes. let's get started. So is this clear? इसके यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन कैसे दे रहा हूँ? I'm not typing anything manually. ये जो हमने डाउनलोड किया ना, आई होप यू रिमेंबर कि कहाँ से डाउनलोड किया, राइट? देयर वर टू ऑप्शंस, एक से हमने ये डाउनलोड किया एजेंट, और एक से हमने ये वाला डाउनलोड किया है की। बाय द वे दिस एजेंट इज कॉमन, इसी एजेंट को उठा के आप इंस्टॉल कर लो, इसी को मैं उठा के इंस्टॉल कर सकता हूँ। दिस हैज नो इन्फॉर्मेशन, बट दिस की इज यूनिक। आई कैनॉट गिव इट, आई कैनॉट गिव दिस की टू यू, यू कैनॉट शेयर योर की विथ मी, वो रीयूजेबल नहीं होता है। दिस इज सिंपल एप्लीकेशन, कोई भी इसी को आपको फिर से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। इफ यू आर यूजिंग माई सर्वर, अगर आप इसमें से कोई लेता है, कोई ग्रुप वगैरह बना के मुझको अप्रोच करता है, सो इफ यू गो हियर इन सी ड्राइव, ये माइग्रेशन टूल में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये रखा है, लुक एट दिस, ऑलरेडी आई हैव केप्ट इट, सो यू डोंट इवन हैव टू डाउनलोड इट, बस ये की आपको लेनी है, हार्डली कोई केबी की होगी वो की, राइट? एंड यू हैव टू ब्राउज इट हियर एंड import this one. सो योर डिटेल्स वो सब यहाँ पर आ जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट था जिसमें आपने जो जो डिटेल्स सेलेक्ट की वो सब आ जाएगा। क्लिक नेक्स्ट। ओके, नाउ द इंफॉर्मेशन हियर इन प्रैक्टिक इन ट्रेनिंग वी हैव ओनली 2 सर्वर, सो इट्स ओके, वो भी डमी सर्वर है। इमेजिन यहाँ पे प्रोडक्शन सर्वर है, 10 12 20 50 100 200 सर्वर है, राइट? सो क्लाइंट विल बी रिलेक्टेंट थोड़ा बहुत कि यार ये मेरा सारा सर्वर का डेटा डायरेक्टली कहीं पर और जा रहा है, राइट? विच मे बी ही इज नॉट कंफर्टेबल विथ, और होता है कई बार। So what they say that use a proxy server, proxy से जाएगा. So then you can connect to Azure Site Recovery using a proxy server. अब ये proxy server का एड्रेस, इसका पोर्ट, ये proxy server का ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है, अगर है तो यूजर नेम एंड पासवर्ड, और किसी एड्रेस के लिए एक्सेप्शन चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका सिस्टम एडमिन टीम लिटरली फिल करता है। यू डोंट इवन हैव टू फिल इट, इधर बहुत ही क्लियर क्रिस्प इंफॉर्मेशन देते हैं आपको कि यहाँ पर ये आना चाहिए, यहाँ पर ये आना चाहिए, और दे विल, ये सिस्टम उनके पास ही होता है वैसे भी। आप उनको ये देते हो, ये की देते हो, दे नो इट, आप स्क्रीन शेयर कर लो, और इफ दे वांट टू डू द प्रॉक्सी सर्वर, उनको आप बस बोलोगे क्लिक हियर। इंटरव्यूअर अगर पूछता है दैट क्लाइंट इज नॉट कंफर्टेबल, या आपको प्रोएक्टिवली बोलता है कि यू टेल मी समथिंग को इशू आया, यू कैन से कि क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं था, देन वी यूज प्रॉक्सी सर्वर वाला ऑप्शन। सो हियर यू गेट ये सारी इंफॉर्मेशन वो फिल करता है। इन आर केस वी आर नॉट यूजिंग एनी प्रॉक्सी सर्वर, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। क्लिक नेक्स्ट। इट इज फेचिंग द डिटेल्स। इस वी मे हैव टू एक्सटेंड अ लिटिल बिट, अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना पड़ता है, बिकॉज आई वांट टू कवर एवरीथिंग टुडे इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन। टुमारो सेशन विल कीप फॉर स्मॉल टॉपिक्स लाइक पॉलिसी, एक टॉपिक है जो मैंने कवर नहीं किया, एंड पॉलिसी, यस, पॉलिसी कैन बी वन ऑफ द गुड थिंग्स इन लैंडिंग जोन सेटअप। नाउ व्हाट इज पॉलिसी? टिल द टाइम इट इज बीइंग डन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। पॉलिसी कुछ नहीं होता है, सिंपल, इन माय एनवायरनमेंट इफ यू सी एनी मशीन ऑफ माइन will always have a tag, मैं उस पर टैग लगाऊं या ना लगाऊं, how am I achieving that? Using policy, that every machine or every resource which is being created in my subscription, that should have a tag, ये उसका टैग का लेबल है, ये उसका वैल्यू है। तो आप बनाओ या ना बनाओ, वो टैग अपने आप उस पर लग जाएगा, that is being imposed by policy. There could be n number of policy. I can have a policy कि मेरे सब्सक्रिप्शन में इस साइज से बड़ा मशीन नहीं बनना चाहिए, सो इवन इफ यू ट्राई क्रिएटिंग दैट मैन्युअली, आपको एरर दे देगा that your policy is not allowing you to do that. Let's say that you can have policy that no machine should have public IP. So you will not be able to assign a public IP, or you will not be able to create a public IP. आपको error दे देगा that your policy is not allowing this. So that is what policy it is. It's very simple, very basic. How to do that on portal? Maybe I'll show it to you tomorrow. और छोटा मोटा मॉनिटरिंग के कुछ टास्क पेंडिंग है, वो मैं आपको कल बता दूंगा, बट माइग्रेशन वी हैव टू फिनिश टुडे. Okay, so this takes time. Now let me go to portal. यहाँ पर पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा वन कनेक्टेड, and then it will give you an option to finalize. I was just thinking कि हो जाता तो it's better that you will get the complete experience. Otherwise I do have ये ready पड़ा है मेरे पास.
बट इसमें 2-4 स्टेप्स ऑलरेडी आगे हो चुके हैं। एंड लुक एट दिस गाइस, इसमें एक बार एक प्रोजेक्ट बन जाता है ना, तो यू कैन लॉग इन समवेयर एल्स और फिर से आप उस की को डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से नहीं कि एक ही बार डाउनलोड कर सकते हो आप। दिस इज द की यू कैन डाउनलोड। सो लेट्स से फर्स्ट यू ट्राइड फ्रॉम हियर, इट डिड नॉट वर्क, राइट, इट डिड नॉट वर्क, तो आप फिर से जाके उस सर्वर पे लॉग इन करके एक की को फिर से ले सकते हो। वो कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर ये जो 0 है ये दिखाएगा 1 कनेक्टेड, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर जस्ट यूजिंग 1। एक ही वहां पर हाइपरवाइजर का सर्वर है। By the way, you can use the same link and same key to connect with multiple servers। इस तरह के अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है ना, जिसमें मल्टीपल हाइपरवाइजर है, वो भी कर सकते हो आप। सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा आपको रिपोर्ट में। Okay, it shows finish, so if I refresh it now, hopefully ये आ जाना चाहिए 1 connected। Okay, can you guys see 1 is connected? What does it mean? That now this hypervisor it's connected। ठीक है, ये जो है अभी हमारा कनेक्ट हो चुका है अपने Azure पोर्टल से। Now finalize the registration। Again, this is going to take some time। What will it is not going to start replication guys, okay, it is just finalizing the registration कि हाँ ठीक है यही एक करना था। अब उसमें कुछ एजेंट्स इंस्टॉल करेगा, वो सारे एजेंट्स वगैरह कौन से होते हैं, आई हैव रिटन इट हियर इन केस यू वांट टू डिस्कस ट्रबल शूटिंग, दीज आर द एजेंट्स दे इंस्टॉल। इस एजेंट्स को रीबूट वगैरह कर सकते हो आप अगर आपका माइग्रेशन नहीं चल रहा है, कुछ अच्छे से नहीं हो रहा है। Okay, so while this is being finalized, I'll show it to you किस तरह से दिखेगा। ये हो जाने के बाद you will get all these options के डिस्कवर में आपको 2 सर्वर्स बताए गए। Why 2? Because we have 2 servers over there। ठीक है, then you can click on replicate or you can click on discover। यहाँ से शुरू करते हैं। फाइनलाइज होने के बाद ये आपको दिखेगा कि 1 is connected, sorry, discovery has been done already in this one। Replicate, I doubt I will see any servers here। I'll explain these to you first. I want to check. Okay, can someone tell me why can't I see my 2 virtual machines? I'm in old project and I can't see my 2 virtual machines. Why can't I see that? Why can't I see them? Replication is pending. I'm setting up the replication actually. Simple guys, because those are being replicated already and one machine can be replicated only once. Hence, I'm not able to see that. मेरे old project में already replicated है machines. Okay, so when you click on replication, here you will have to select that what do you want to migrate. Are you migrating your servers? Are you migrating some web app? In our case, we are migrating virtual machines। Where do you want to migrate to? What's your virtual machine? अगर यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होता तो यहाँ पर भी कोई और ऑप्शंस आ जाते हैं as in SQL database वगैरह, but as of now if it is a virtual machine it is going to Azure virtual machine। Click on continue। This is not being migrated by the way, okay? Now, are your virtual machine virtualized? Sorry, are your machines virtualized? Is it physical server? Is it virtual server? What is it in our case, guys? जिस मशीन वर्चुअल को सर हम माइग्रेट करने वाले हैं वर्चुअल वो 2 मशीन क्या है? Are those physical machines or virtual machines? Virtual machines. Yes, वर्चुअल virtual machines, and they are with Hyper-V। Hyper-V. Then I click next। Import migration setting from assessment। Now look at this। जो assessment हमने देखा था, there I told you कि based on those machines, assessment एक सजेस्ट करता है कि ये साइज होना चाहिए, इतना रैम होना चाहिए। If I want to use that one, I can apply, yes, apply the migration settings, right? And here I will have to select that group। जो ग्रुप मैंने बना रखा था ना, वो ग्रुप मुझको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें सब कुछ सारी डिटेल्स होगी। बट आई डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज वो असेसमेंट हमने किसी और का कर रखा है, माइग्रेट हम कुछ और कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? असेसमेंट हमने कोई 20 डमी मशीन्स का किया है, माइग्रेट हम 2 एक्चुअल मशीन्स कर रहे हैं यहाँ पर। यस Are you getting it guys? What is the difference? If you say yes here,
तो वो सारे असेसमेंट की चीजें वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा। बट इफ यू से नो, आई विल स्पेसिफाई, तो ठीक है, यू कैन गो हेड एंड डू। एंड यहाँ पर आपको आपके मशीन्स दिखेंगे। इन माई केस आई एम नॉट गेटिंग इट, बाय because my machines are already being replicated, so we will wait। अच्छा, ये वाला हो गया है हमारा डमी जो है रेडी हो गया। सो लेट मी शो इट टू यू। रेप्लिकेशन होने तक वेट नहीं करेंगे, विल मूव टू द एक्चुअल द ओल्ड प्रोजेक्ट। देन रेप्लिकेट होने तक हम वेट नहीं करेंगे फॉर श्योर। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने तक वी आर गोइंग टू वेट। सो डमी प्रोजेक्ट, नाउ लुक एट दिस। माइग्रेट यहाँ पर ग्रेड आउट है क्योंकि कुछ रेप्लिकेट ही नहीं हुआ है मेरे ओरिजिनल प्रोजेक्ट में। माइग्रेट, यू विल सी इट इज नॉट ग्रेड आउट। Why? Because machines are ready to be migrated. replicated. They are replicated already, right? So यहाँ पर replicate पे मैं क्लिक करता हूँ। 2 सर्वर डिस्कवर कर लिए, ठीक है। रेप्लिकेट सबको नहीं करेगा, यहाँ पे मे बी 250 सर्वर ये कर दिया, बट सबको रेप्लिकेट बाय डिफॉल्ट नहीं करेगा जो। So I click the same things which we discussed here. Yes, they are virtualized, they are on Hyper-V. I do not want any settings from assessment. Look at this. Now these 2 machines. Here also, if I want to replicate, let's say you have 15 machines, you want to replicate only 10, you can do that. You don't have to replicate all the machines, right? But I want to replicate these 2. Click next. Now target setting. रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट ही नहीं होगा अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आई मीन विच इज वेरी ऑब्वियस, यहां तक ही नहीं आ पाओगे आप, ठीक है। देन रिसोर्स ग्रुप, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड योर रिसोर्स ग्रुप, देन नथिंग इज गोइंग टू वर्क गाइस। रिसोर्स ग्रुप अगर नहीं है आपका तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो I did not create resource group unfortunately. So let me take one of the resource groups which I can delete. Or it's better that I'll create one. Okay, I'll take this one, fine, which is already ready. ये मैं लेता हूँ। This needs to be checked अगर SQL कोई पिक्चर में है। We do not have any SQL, that's fine. I have Windows Server license है तो चेक करो, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पर आप चेक करोगे तो वो डिटेल्स पूछेगा लाइसेंस वगैरह की। It's better that you leave it. अगर होगा तो वो आर्किटेक्ट टीम सारा कुछ चेक करके बता देगा। Okay, then storage account I told you, right? Storage account आप लोगों को एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। Now storage account, the one which you create, उसमें सॉफ्ट डिलीट इनेबल नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट डिलीट अगर इनेबल होता है तो वो काम नहीं करेगा। इट डजंट कनेक्ट, बहुत सारे एरर देता है। यहाँ पर आई हैव बीन फेसिंग मेनी एरर्स, सो आई एम चेकिंग। वो एक स्टोरेज अकाउंट बनाने का ऑप्शन देता है, आई एम नॉट श्योर हाउ दैट वर्क्स। Here I can select existing storage accounts. Let me see if I can. नहीं होता तो we'll create one. Let's say both machines. Okay, I have created the virtual network in subnet already. Virtual this storage account, it does give an option to create automatically sometimes. I faced this problem yesterday also. Sometimes it wasn't giving, sometimes it gives. Because now I have not created any storage account which can be used here. Look at this, I'm not able to connect to these what storage accounts. And even if the storage account which has soft delete enabled, that won't work. That I have already mentioned somewhere here. Somewhere in notes you will find that that storage account should not have the soft delete enabled. So you'll have to create one storage account.
Okay, it is not accepting the one which I have. And how to create it exactly, you can click on this and it gives the complete information कि वो storage account आपको किस तरह से बनाना है. But I'm checking again that why can't I see one storage account, the option to create storage account. Okay, no, it's not giving the option. So you select this, guys. You select these options, everything यहाँ पर आप select करते हो, और नहीं भी हो तो आप storage account एक बना लेते हो. Then next you go ahead and select compute, the one which you see, this one, compute. यहाँ पर आकर आप select करते हो sizes. तो ये दो मशीन का साइज ऑन प्रेम पे ये है, मुझको Azure पे क्या साइज चाहिए वो वाला विंडो आपको मिलेगा, राइट? That window you will get under compute. But if you have selected कि assessment से already लेना चाहिए तो वो already वहां पर pick कर देगा. Then you will see disk size. That way, with the machines which you are bringing, one machine has 5 disks. Do you want to replicate all of them or only OS disk? Same as ASR. Once you do select these two options, then you can go ahead and create you can start your replication. You simply, इसके बाद कुछ नहीं, बस tags है. You all of you know what tags are. You simply click on tags वगैरह में नाम दे दो, and then you start the replication. Is this clear, guys, to everyone? Yes. I'll see अगर Well, I थोड़ा guess time we can बचता है तो click I on will check. next. Sorry. I guess we can click on next. No, it is asking for a value. Okay. वो दे देता है. I'm not sure, कभी मिलता है कभी नहीं, क्यों ऐसे हो रहा है, I don't know that. But it's not a big deal. Even if it is not there, you go ahead and create one. Now ये सारे किसी न किसी से associated है और इनमें soft delete वगैरह enable है. Hence I'm not able to use this. See, there cannot be Yes. access replication storage, right? But you can create one storage account. जब आप अपना करोगे practical, तो आप एक resource group बनाओगे, एक vnet बनाओगे, right? एक subnet बनाओगे, तब एक storage account भी बना लेना. Simple है. And after that you can start the synchronization. Once it is started, it takes 3 to 4 hours. और उसके बाद this is how you see it. You can click on overview. Now we are not going back to dummy machine. Now we are doing everything in this UT-Kloud migration. Look at this migration. Test migration I have already completed. हम फिर से test migration करके देखेंगे. In your case, if you have not performed test migration, आपको नहीं दिखेगा. Test migration 0 दिखेगा. Any test migration in progress 0. Any test migration pending 0. Cleanup pending 0. कितने machines है जो replicate हो रहे? There are 2. Any issues found? No. Anything in progress? Job कोई है replication वगैरह? No. Right? So here we can go ahead and start the migrating the machines. But before we migrate the machine, we'll have to do a test migration. So I'll take one of the machines जिसका मैं test migration करता हूँ. Let's say Linux machine. I'll come here. I'll click again. I'll show it to you कि मैं कहाँ से आया हूँ. Azure migrate tool. Click on server, select, and guys, you are not the only one who's working on migration. Okay, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, एक्चुअल वाले में आपको यहाँ पर 10 और 20 प्रोजेक्ट दिखते हैं. हर टीम कुछ ना कुछ माइग्रेट कर रही है. So select your project carefully, then come here, click on अगर डायरेक्ट माइग्रेट करना है, we'll click on migrate, but we want to do test migration, right? So I'll go ahead and check the overview. I want to go to those machines. These are the 2 machines which we have. Okay, so I'll go ahead and click on that. Replicating machines, and I'll click one of them. मैं किसी एक का ही टेस्ट माइग्रेशन कर रहा हूँ. वैसे भी आप एक का ही करोगे, it's fine. Okay, everything is fine. It's healthy, no configuration issue. सब कुछ है. Now you can do a test migration. You can do migration from here, एक एक machine, और वहां से भी आप कर सकते हो. Then this is a test migration, so I have created a test migration VNet, and just click on it, and that's it. यही है आपका migration, simple.
Now, do you guys remember test failover? In Azure Yes. site recovery, we did test failover. Do you remember that? Yes, guys. Yes, no, maybe. Yes, sir. Yes, you remember, right? So in that test failover, when we were creating the machines, when we were doing the test failover, did anything happen to actual machine? Was that shut down or anything was done to actual machine in test failover, guys? नहीं कुछ नहीं. Right. So similarly, when you do the test migration, आपकी actual machine जहां पर भी है वो on prem पे है, AWS पे, Hyper-V, nothing is going to happen. Now I will be getting a new machine here. So how is this machine being created? ये जो सिंक कॉपी हो रखी है उस कॉपी से आपकी न्यू मशीन बन रही है. सिंपल. So it is not actually teasing or touching your actual machine which is there. So once I click on test migration, I should see a machine here in some time. It is starting the test migration. We can check the details here if we want. Once it is here under creating virtual machine, तो यहाँ पर आप आ जाओगे तो आपको एक मशीन दिख जाएगी बनती हुई. Yes, guys, while this is being done, do you guys have any doubts, any questions? Like in test failure, the VM should be in running status. Yes. Here also it is mandatory. Yes. Both, in both Hmm. cases. It is using replication. By the way, in failover, it's not mandatory that you're, in fact, in most of the time when you do site recovery, your machine is not in running cases. If your machine is running, why would you do the अच्छा, failover? Hmm. That's not mandatory. Not mandatory, yes. But to sync the data, machine should be on, if that was your question. मशीन ऑन होगी तब तक ही डेटा सिंक हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा. Hmm. So here it is, guys. This is being created. Now this is being created, hence it says ASR, temp, etc. Once this will be done completely, then it will give the exact name -temp. So we are going to wait. It's being created. Any questions do you guys have? Any doubt? We have some time, guys. Please ask. We are going to do the test failover for this server. Do you guys want to do the testing with public IP on test server, or you want to do it at the end on both of the servers? Yes, guys. Yes, no, टेस्ट maybe. फेल्योर का भी पब्लिक आईपी से Definitely. चेक कर सकते हैं इसमें. हाँ हाँ. हाँ, डेफिनेटली. आई Why मीन not? एक्चुअल एनवायरनमेंट में तो आपको टेस्ट फेल के बाद ही टेस्टिंग करनी है, उसके बाद ही आप एक्चुअल इस पे जाओगे. अगर टेस्ट फेल में आपका ऐप नहीं चल रहा है तो एक्चुअल माइग्रेशन पे आप जाने ही नहीं वाले हो. टेस्ट का ऑप्शन हम्म. दिया ही इसीलिए दैट बिफोर यू मूव योर मशीन you go ahead and test it. करेक्ट. हाँ. Let's see how much time it takes. By the way, it's not getting public IP by default. I will have to assign a public IP, but I can't do it now because machine is being created. By looking at the name itself, you can say that it is being created. Plus, we have the details here.
Once that is done, once we have tested and everything, then we'll have to go ahead and clean the test failover. Same like we did clean the cleaning of ASR replication. Similarly, it will delete all the details. So this is the machine. Now look at this. It is initializing the test failover. In some time, I have an option, this option available, which says clean up the test migration. Will appear in some time once this is done. Yes, guys, do you have any questions, any doubts? Please do ask. Okay, it looks running now, but I'm still not going to touch that machine because I'm not sure with this name. नाम इस तरह से नहीं दिखता है. नाम दिखेगा आपको जो एक्चुअल में आपकी मशीन का नाम था वो -temp. And if I go to background and check the process, it is in progress, guys. I'm refreshing. Yes, guys, any doubts, any questions? Do you have anything which you did not understand? Please do ask. We have time now, and we won't have time after this. We are about to finish our course. I mean, today is the official, it's last session, monitoring, policy. These are very small and basic topics. I'm sure if even if you watch a video of 10 minutes, you guys will be able to figure it out. So if you have any doubts, any questions, please do ask. I'm waiting for this machine to be created. Meanwhile, I'll check that what is the logic behind it. Sometimes it gives an option to create the storage account automatically, and sometimes it doesn't give me the option. एक्चुअल में जो हाइपर वी AWS का ये सब जो प्रैक्टिकल है, लाइव इन्वायरमेंट सिर्फ Azure का ही पार्ट करना है ना? Whatever I have shown now, वो करना है आप लोगों को. ये मशीन मैं आप लोगों को दे दूंगा. That too, if you guys are making a group और आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, because I cannot create multiple machines, this is very costly. और AWS पे मेरा free account है नहीं फिलहाल. I'm paying for this machine. By the way, look at this. I didn't do anything, and it gave me an option auto create. Funny sometimes. So अगर आपको replication start करना हो, so this is how you do it. You select your subscription, you select your resource group. SQL अगर server होगा तो ठीक है. Cache storage account auto create दे दिया luckily. यहाँ पर we are going ahead and selecting one's virtual network subnet. This is done. Click next. यहाँ पर आपकी सारी machines दिखेगी, and then you can decide what kind of size do you want. By the way, ये भी जो है ना आपका assessment में auto fill हो जाता है सब कुछ. If not, then you have to fill it. तो कौन सी मशीन का साइज, किस तरह का साइज चाहिए आपको. By the way, you can select again here also. You can select that automatically select the configuration, और यहाँ से, और you can select something manually. तो जब भी मशीन बनेगी इसी साइज में बनेगी. And if you would have applied the assessment details, वो सब कुछ यहाँ पर अपने आप अप्लाई हो जाता है. Then you click next. By the way, one more thing, it doesn't take names. अगर इस तरह के कुछ नेम हो गए ना तो ये लेता नहीं है. विंडोज एक ट्रेडमार्क है, वो नहीं लेगा. So I'll have to rename it to win वगैरह ऐसे कुछ. Next. Disk. Do you want to, now all these machines have only one disk. अगर यहाँ पर मल्टीपल डिस्क होती तो ये पूछता कि आपको माइग्रेशन में सारे डिस्क ये करनी है या सिर्फ OS डिस्क करनी है.
Now depending on the application owner ने क्या बोला, I can decide that. अगर owners बोल रहा है नहीं सब सर्वर ले लो, डेटा को छोड़ दो, काम का नहीं है, वो move it. किस टाइप के डिस्क आपको चाहिए जब भी आपकी मशीन ही होगी? प्रीमियम, स्टैंडर्ड एचडीडी, स्टैंडर्ड एचडीडी और एसएसडी. Click next. Tags, you know, I am not pushing anything, I'm not explaining this. Then click next, and you can start replication. And now you know how it looks after replication. Yes, guys, any doubts, any questions you have? So well, if we use the assessment, then also we get the option to customize the OS disk type and Yes, you machine will get, size. yes. It will apply all the recommendations from that assessment, but you will still have a chance to change that. Okay. It is taking longer than expected or longer than normal time. इतना time नहीं लगता है, but now I don't want to cancel that और फिर से start नहीं करना है मुझको. So we may have to extend for one session, guys. Maybe not for all 40 minutes. ये करेंगे हम, इसको टेस्ट करते हैं अगर आप लोग चाहते हो तो. अदरवाइज वी विल स्किप इट विदाउट टेस्टिंग एंड विल डू द एक्चुअल माइग्रेशन और उसको टेस्ट कर सकते हैं हम लोग. टेस्टिंग के दोनों के स्टेप सेम है. मुझको पब्लिक आईपी लगाना है, एक एनएसजी लगाना है जिसमें मुझको इंटरनल ट्रैफिक को अलाउ करना है, एंड आई विल शेयर द पब्लिक आईपी विद यू गाइस एंड यू शुड बी एबल टू सी द वेबसाइट व्हिच आई ऑलरेडी शोन यू. वो वेबसाइट आपको पब्लिकली दिखनी चाहिए. Now look at this, it disappeared, which means it is still working, and I told you वो rename होगा थोड़ा सा. temp नाम के साथ आएगी मशीन. So it may take some time. We have 7 minutes left. Do you guys need a break? 5 minutes का break चाहिए? Yes. Okay, so let's take a break now instead of just looking at the screen. It's better that we take a break now, and we'll resume. This will be a recorded session again, session number 4. Recorded session होगा. Maybe we will not complete it. 20 मिनट में इसको खत्म करेंगे, and then if you guys want, we will have that a casual session, or if you want, we can do that tomorrow also. कल कर लेंगे, इसको कोई issue नहीं है. Okay. So next session will be a recorded one. What are we going to do is we are going to check this machine एक बार के proper हो गया या नहीं. इस पे हम public IP लगाकर testing नहीं करेंगे. We'll just see कि सब कुछ हो गया या नहीं अच्छे से. Right. Once that is done, we will clean that test failover, and then we'll do the actual migration. We'll clean the test migration, and then we'll do the actual migration, और उसको हम test करके देखेंगे. So this machine is Okay, sir. almost ready. Look at this. Now exactly name has been picked, -test. So if we are not checking anything, I think we don't have to take a break. Let me see if I can. Okay, everything has been done successfully, guys. Fine. ये हो गया आपका machine. आपकी actual machine भी up and running है. Now if I show you, this is the machine which we are migrating. ठीक है, इसमें जो machines है ना, इस machine को हमने migrate किया. And now if you see, ये मेरी machine actual में up and running है. इस machine को कुछ नहीं हुआ है. Let me see if I can open the browser here. So here, this is the machine which I migrated, and let's see if it is working here also. Now look at this. Nothing has happened to my actual machine. जो Ubuntu हमने वहां पर migrate किया, उसको Windows को तो वैसे ही कुछ नहीं होना था. We haven't done that, right, guys? So did you understand? This was your test Yes. migration. Right now we are not putting a public IP and cross verifying that case machine पे वो website चल रही है नहीं. That I'll show you when we do the actual migration. But is this clear till here? Yes, sir. Okay, now let's go ahead and clean up the test and migration which we have done, and actually start the migration, and then we'll take a break. Okay, here I come, I select the servers. Which server? This server. The test failover is
cleanup is pending. So here I have an option. There I can put the note that testing was completed successfully, etc. Who was available? What did you do? Did you assign public IP? Public IP assign कर दिया. Public IP assign कर दिया network team ने. This one from network team was available. Uze from application team was available. He tested. ये सब कुछ कर दिया. Email attach. सब कर दिया. Testing is completed. Clean the test. ये सब आपको एक्सप्लेन करना है गाइस. अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट? ये सारी चीजें जो है ना, क्लिक वगैरह, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है. प्री माइग्रेशन इट्स नॉट योर हेडेक. असेसमेंट जो है, बिजनेस असेसमेंट इज नॉट योर हेडेक. डिपेंडेंसी एक याद रखना असेसमेंट में से, और साइजिंग वाला, दैट हाउ यू साइजिंग भी आप तक नहीं आता है, वहां से आर्किटेक्ट टीम उसको ऑलरेडी, क्योंकि उस पर कॉस्ट ये होता है. बट दीज थिंग्स दीज आर अप टू यू. यहाँ पे आर्किटेक्ट टीम गाइडेंस सॉर्ट ऑफ थिंग होता है आपके साथ, कोई ना कोई एक आधा बंदा आर्किटेक्ट टीम से, बट करना आपको होता है पूरा. Okay, so I have initiated the test migration cleanup. In some time, it will be done. It will be cleared, and you will see this machine will be deleted from here. Once that is done, we'll again come back to our project, and then we will click on migrate. Select क्या migrate कर रहे हो आप? Where do you want to migrate? Azure virtual machine पे. ठीक है. It is fetching the machine. Why do you think it is showing only one? दोनों क्यों नहीं बता रहा है मुझको? Linux वाला already Sorry, Linux वाला already. replicated. No, guys, see, don't get confused between terms. So are you saying that this machine is not replicated? Are you saying this machine is not replicated? By the way, It is also am I replicated. clicking on Migrate. replicate? Am I clicking on replicate? No, no. Replicate में मैं जाऊंगा तब वो machine नहीं दिखेगी जो replicate हो रही है. यहाँ पर दोनों भी नहीं दिखेगी because दोनों replicated है already. I am clicking on migrate. I'm doing the actual migration now, but still I'm not able to see the next machine. Why? टेस्ट क्लीनअप माइग्रेशन चल रहा है Yes, इसके लिए. yeah, वो अभी तक complete हुआ नहीं है. Simple. So we'll Hmm. wait. This machine has been deleted. Let's see अगर वो हो गया है या नहीं. It has been done. Oh, it started. Let's see how much time it takes. Successful, successful, successful. Now I think we should be able to see it. So if I click here, if I click on migrate, when I'm clicking on migrate, guys, which means my machines are replicated. Without replication वाली machine को मैं migrate नहीं करूँगा. Can you see now? And plus this healthy, it shows this is replicated. So I click these machines. Now I click on migrate. ये मेरा actual migration शुरू करेगा. But it will ask for one confirmation. Okay, I think I missed that. वो पूछता है that do you want to shut down your machines? And your migration has been started, by the way. So if I click here, look at this. Or maybe it won't ask. Fine, I got it. It won't ask. It will, by default, it will shut down the machine. I do not have an option. It may ask, it will not ask. Let's see. Are you getting it, guys? Any confusion? So it is shutting down the machine. अब मेरे उस सर्वर पे जो है वो machines नहीं चलने वाली है. यहाँ पर if I go and if I check the browser, it won't work. Guys, less than 30 seconds are pending. We'll resume once this is done. ये सब होने के बाद मैं एक पिंग करता हूँ. It will hardly take 10 minutes maybe. Take your break. Coffee वगैरह कुछ पीना है आपको पी लो. Then we'll complete this in 20 minutes and then we are done for the day. But we'll have to wait till the time this gets completed. Okay, so I'll ping in the group and meanwhile I'll share that file also जिससे आप assessment कर सकते हो. And if you want to check, look at this. These servers got shut down. Can you see, guys? जो test yes. failover में नहीं हुए थे Yes. shut down. Hmm. Okay.